गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है एआई बेस्ड टीबी डेथ प्रेडिक्शन मॉडल। टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए और गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु जो है फर्स्ट इंडियन स्टेट बना है जिसने अपने स्टेट टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम में एक टीबी डेथ प्रेडिक्शन मॉडल को इंटीग्रेट किया है। तो ये स्टेट का जो एग्जिस्टिंग डिजिटल ट्रायज है प्लेटफॉर्म टीबी सेवा, उसके अंदर ही इसको इंटीग्रेट किया गया है ताकि फास्टर हॉस्पिटल एडमिशन्स हो सके सिवियरली इल पेशेंट्स की। तो ये इनोवेशन एक कोलैबोरेटिव आउटकम है आईसीएमआर एनआईई का और तमिलनाडु स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट का। तो इसके अंदर 5 क्लिनिकल इंडिकेटर्स का यूज़ किया जाएगा टीबी डायग्नोसिस के टाइम पर। बॉडी मास इंडेक्स, प्रेजेंस ऑफ पीडल ओडेमा मतलब स्वेलिंग ऑफ फीट, रेस्पिरेटरी रेट, ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल्स और एबिलिटी टू स्टैंड विदाउट सपोर्ट। अब हेल्थ केयर वर्कर्स ये वेरिएबल्स इनपुट करेंगे और ये मॉडल फिर कैलकुलेट करके बताएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ अगर 10 से 50% है सिवियरली इल पेशेंट्स की, तो उन्हें एडमिट किया जाएगा। और जो सिवियरली इल नहीं फ्लैग किए जाएंगे उनकी मोर्टेलिटी रिस्क 1% से 4% रहेगा। तो ये शार्प डिफ्रेंसिएशन जो है हेल्प करेगा फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को कि वो प्रायोरिटाइज कर सके एडमिशन्स और अर्ली ट्रीटमेंट इनिशिएट कर सके। तो सिवियरली इल पेशेंट्स को आइडेंटिफाई करने का ये 5 इंडिकेटर्स का मॉडल है ताकि टाइमली इन पेशेंट केयर मिल सके। एवरेज टाइम जो डायग्नोसिस होता है हॉस्पिटल एडमिशन का वो 1 डे है तमिलनाडु में, लेकिन 25% जो सिवियरली इल पेशेंट्स हैं वो 3 से 6 दिन का डिले फेस करते हैं। ये न्यू मॉडल जो है इन्हीं डिलेज को रिड्यूस करेगा। तो ये मॉडल को डेवलप किया गया है डेटा यूज़ करते हुए 56,000 टीबी पेशेंट्स का। इसमें ऑब्जर्व किया गया कि 10 से 15% जो एडल्ट जिनको डायग्नोस होता है टीबी वो क्लासीफाई किए जाते हैं एज सिवियरली इल। ये मॉडल वैलिडेट कर रहा है कि 5 जो वेरिएबल्स हैं यूज़ किए गए जो हैं वो कॉम्प्रिहेंसिव बेसलाइन वेरिएबल्स हैं। अगर हम निक्षय टीबी पोर्टल के साथ कंपेयर करें तो निक्षय वेरिएबल्स को तो कम से कम 2 से 3 हफ्ते तक लग जाते हैं। उसके अगर हम वेरिएबल्स देखें तो 2 से 3 हफ्ते तक उसको आगे बढ़ने में लग जाते हैं, तो वो एक बहुत लेट हो जाता है हाई रिस्क पेशेंट्स के लिए। तो सभी के सभी 2800 पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ जो तमिलनाडु में हैं वो ऑलरेडी ही टीबी सेवा एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। और ये जो मॉडल है ये रिड्यूस कर देगा लॉस इन टीबी केयर कास्केड और एक तरह से रेप्लिकेबल मॉडल है अदर इंडियन स्टेट्स के लिए भी। तो ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा टीबी के केसेस आते हैं और हर जो है 3 मिनट्स में 2 डेथ्स अगर हम देखें तो टीबी की रिपोर्ट होती हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ब्रिक्स समिट 2025। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो 17th ब्रिक्स समिट जो है वो रिसेंटली रियो डी जेनेरो में हेल्ड की गई है। तो इसमें म्यूचुअल रिस्पेक्ट, सोवरन इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, इंक्लूसिवनेस को एम्फेसाइज किया गया है। कमिटमेंट टू पीस, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, रिफॉर्म ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस रिटरीट की गई हैं। इंडोनेशिया ने एज अ फुल ब्रिक्स मेंबर ज्वाइन किया है। एक्चुअली 11 न्यू ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज़ को वेलकम किया गया है। ठीक है, तो एक तरह से एक्सपेंशन एक इवॉल्विंग मल्टीपोलर वर्ल्ड दिखा रही है अंडर ग्लोबल साउथ सॉलिडारिटी। ब्रिक्स ने अपनी कमिटमेंट दिखाई है इंक्लूसिव इनोवेशन, क्लाइमेट एक्शन और इक्विटेबल हेल्थ सिस्टम्स को। रियो डी जेनेरो डिक्लेरेशन कह रही है इक्विटेबल, इफेक्टिव और अकाउंटेबल मल्टीलैटरलिज्म, और इसने यूएन समिट फॉर द फ्यूचर ऑफ द फ्यूचर्स पैक्ट फॉर द फ्यूचर को भी सपोर्ट किया है। तो इसमें जो डिक्लेरेशन है इसमें कंसर्न दिखाए जा रहे हैं ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग सर्च के ऊपर। क्लाइमेट चेंज को सिक्योरिटी नरेटिव्स के साथ लिंक करने को भी रिजेक्ट किया गया है। एडवोकेट किया गया है डेवलपमेंट सेंट्रिक मल्टीलैटरल सॉल्यूशंस को फॉर पॉवर्टी, हंगर एंड एनवायरमेंटल क्राइसिस। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाया गया है पेरिस एग्रीमेंट और यूएनएफसीसीसी प्रिंसिपल्स पर। एम्फेसाइज किया गया है इंक्लूसिव डेवलपमेंट को। ठीक है, रिकग्नाइज किया गया है डेमोग्राफिक चेंजेस को एज बोथ अ चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट। 17th ब्रिक्स समिट जो है उसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया की अपकमिंग प्रेसिडेंसी 2026 को भी अनाउंस किया है। 17th समिट में इंडिया एक लीडिंग वॉइस बन के सामने आया है। थीम्स ऑफ डी डॉलराइजेशन, क्लाइमेट फाइनेंस, डिजिटल गवर्नेंस और ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म पर। ब्रिक्स पे और नेशनल करेंसी सेटलमेंट फ्रेमवर्क्स को भी डिस्कस किया गया है। ब्रिक्स मल्टीलैटरल गारंटी मैकेनिज्म को लॉन्च किया गया है बाय न्यू डेवलपमेंट बैंक, और ताकि मोबिलाइज हो सके प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्लाइमेट में और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। तो अमेरिका ने जो है इसके बारे में जो है वो अपोजिशन दिखाया है।
ब्रिक्स के अगेंस्ट, क्योंकि ब्रिक्स जो है 45% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, 35% ग्लोबल जीडीपी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसलिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि 10% टैरिफ लगाया जाएगा जो भी कंट्री अलाइन करती है ब्रिक्स की एंटी अमेरिकन पॉलिसीज़ के साथ। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो है इंडिया के, उन्होंने बोला है कि इंडिया हम जो है वो डॉलर को टारगेट नहीं करना चाहता, बल्कि ऑल्टरनेटिव ट्रेड सेटलमेंट्स को एक्सप्लोर करना चाहता है ड्यू टू प्रैक्टिकल कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। डिफेंस मिनिस्टर ने रिसेंटली अंडरस्कोर किया है रोल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट ऑपरेशनल रेडीनेस और फाइनेंशियल एजिलिटी ऑफ आर्म्ड फोर्सेस को एनहेंस करने के लिए। तो डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, हेडेड है ये बाय कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स। मैंडेट जो है डिपार्टमेंट को वो ब्रॉडली मिलती है ऑडिट, फाइनेंशियल एडवाइस, पेमेंट, अकाउंटिंग ऑफ ऑल चार्जेस पर्टेनिंग टू आर्म्ड फोर्सेस करने के लिए। तो इसका एक वास्ट जोग्राफिकल स्प्रेड है विद द नेटवर्क ऑफ ऑलमोस्ट 1110 ऑफिसर्स जो कि केटर करती हैं ऑल एलिमेंट्स ऑफ इंडियन डिफेंस सर्विसेज को। तो ये प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर है फॉर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, फर्निश करता है नेसेसरी इन्फॉर्मेशन फॉर अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, प्रिपेयर करता है एनुअल कंसोलिडेटेड अकाउंट्स ऑफ डिफेंस सर्विसेज रिसीट्स एंड चार्जेस। ठीक है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिपार्टमेंट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके ओरिजिन हम ट्रेस कर सकते हैं मिलिट्री पे मास्टर्स जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर होते थे। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम। टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री ने जो है कहा है कि वो एडिशनल एलोकेशन चाहते हैं नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम के लिए फॉर मार्जिनलाइज स्टूडेंट्स। तो ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है लो इनकम स्टूडेंट्स फ्रॉम मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ को हेल्प करने के लिए जो अपनी मास्टर्स डिग्री या पीएचडी कोर्सेज अब्रॉड में करना चाहते हैं। तो इसमें हर साल 125 फ्रेश कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाते हैं, 115 एससी कैंडिडेट्स होते हैं, 6 जो है वो डीनोटिफाइड नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स को बिलोंग करते हैं, 4 जो है वो लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स कैंडिडेट्स होते हैं, ट्रेडिशनल आर्टिसंस के होते हैं। 30% जो स्कॉलरशिप्स हैं हर साल वो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एयरमार्क्ड होती हैं। एप्लीकेंट जो है वो 35 ईयर्स से कम एज के होने चाहिए, वो एक उनके पास अनकंडीशनल ऑफर होना चाहिए एडमिशन का मास्टर्स या पीएचडी कोर्स का फ्रॉम यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट जो अब्रॉड लोकेटेड है। इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी जो है वो उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट या की जो है वो रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। एप्लीकेंट के एटलीस्ट 60% मार्क्स आए होने चाहिए इक्विवेलेंट ग्रेड के इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। टोटल फैमिली इनकम जो है वो लेस देन 8 लाख रुपीज़ पर एनम होनी चाहिए। अब इसमें बैचलर कोर्सेज नहीं कवर होते हैं और एक ही फैमिली के 2 चिल्ड्रन से ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं जापानिका राइस। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दिल्ली बेस्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च ने क्रिस्प आर CAS9 जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए फॉस्फेट अपटेक बढ़ाया है जापानिका राइस वैरायटीज़ में। तो ये जापानिका राइस क्या है, ग्रुप ऑफ राइस वैरायटीज़ नदर्न और ईस्टर्न चाइना में जो ग्रो होती हैं एक्सटेंसिवली और बाकी के भी एरियाज़ में ऑफ द वर्ल्ड में। काइंड ऑफ ये एशियन राइस वैरायटी है, शॉर्ट टू मीडियम ग्रेन होता है, इसमें 0 to 20% अमाइलोज कंटेंट होता है। ये कूलर जोन्स ऑफ द सब ट्रॉपिक्स और टेम्परेट जोन में पाए जाते हैं। प्राइमरी टाइप ऑफ राइस जो कि ग्रोन होता है और कंज्यूम होता है जापान में। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन SDG इंडेक्स। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन SDG इंडेक्स रिपोर्ट रिलीज़ की गई है नीति आयोग द्वारा। इसको डेवलप किया गया है नीति आयोग और मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और टेक्निकल सपोर्ट फ्रॉम UNDP के साथ। ये मेजर कर रही है परफॉर्मेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑन दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। की टूल है ये मॉनिटर करने के लिए डेवलपमेंट रिलेटेड प्रोग्रेस एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। इसमें अलग अलग कैटेगरीज अनाउंस की गई हैं जैसे अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर और एस्पिरेंट। ऑफ कोर्स अचीवर सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है, सेकंड नंबर पर फ्रंट रनर है। अब इसमें देखा गया है कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं मिज़ोरम, सिक्किम और त्रिपुरा के वो फ्रंट रनर स्टेट्स में आते हैं। मिज़ोरम के हाईएस्ट स्कोरिंग डिस्ट्रिक्ट भी हैं। अरुणाचल प्रदेश में लोएस्ट स्कोरिंग डिस्ट्रिक्ट हैं पूरे रीजन के। सिक्किम में नैरोएस्ट रेंज है इन टर्म्स ऑफ हाईएस्ट और लोएस्ट डिस्ट्रिक्ट। त्रिपुरा की डिस्टिंक्शन है कि उसके पास सब ऑफ द हाईएस्ट स्कोरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ऐसे ही मिज़ोरम और नागालैंड में भी हैं, लेकिन बहुत वेरिएशन भी है इसमें। ठीक है, कि कुछ हाईएस्ट स्कोरिंग भी हैं और कुछ फिर लोएस्ट स्कोरिंग भी हैं। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is AI-based TB death prediction model.
This topic is important for your governance section. So, Tamil Nadu has become the first Indian state to integrate a TB death prediction model into its state TB elimination program. So, this has been integrated with state's existing digital triage platform TB Seva. This model is going to enable faster hospital admissions for severely ill patients. This will ultimately reduce TB related mortality. So it's a collaborative outcome between ICMR NIE and Tamil Nadu State Health Department. So this newly launched predictive model is using five clinical indicators at the time of TB diagnosis: body mass index, presence of swelling of feet, respiratory rate, oxygen saturation levels, ability to stand without support. So healthcare workers will input these variables, and this model will calculate the probability of death, ranging from 10 to 50% for severely ill patients, and based upon that, hospital admissions will be prioritized. For those not flagged as severely ill, the predicted mortality risk would remain between 1 to 4%. This sharp differentiation in risk estimation helps frontline healthcare staff prioritize admissions and initiate early treatment. Prior to this model, TB Seva system of Tamil Nadu helped identify severely ill patients using the five indicators, and this team at ICMR NIE has noted that while average time from diagnosis to hospital admission in one day in Tamil Nadu, about 25% of severely ill patients face delays of 3 to 6%. But this new model is expected to reduce these delays. This model was developed using data from nearly 56,000 TB patients. It was observed that 10 to 15% of the adults diagnosed with TB were classified as severely ill. This model variation has demonstrated that five-stage TB trials used in this TNKET are just as predictive of mortality risk as the comprehensive baseline variables which are used in the National Nikshay TB portal. But Nikshay variables typically take up to 3 weeks to populate, which is too late to act upon high risk patients. Okay, so all 2,800 public health facilities which currently use TB Seva application will be integrated with the system, and this will serve as a replicable model for other Indian states as well. We all know that India has the highest TB burden in the world, and 2 deaths every 3 minutes are reported from India. The next topic is BRICS Summit 2025. This topic is important for your international relations. 17th BRICS Summit was held in Rio de Janeiro, Brazil recently, which has emphasized mutual respect, sovereign equality, democracy, and inclusiveness. It has also reiterated its commitment to peace, inclusive development, and reform of global governance institutions. Indonesia has formally joined as a full BRICS member. In fact, 11 new BRICS member countries were welcomed. This expansion reflects an evolving multipolar world order and global South solidarity. These also highlight BRICS' commitment to inclusive innovation, climate action, and equitable health systems. This Rio de Janeiro declaration was adopted, which called for equitable, effective, and accountable multilateralism. It supported the UN summit of the futures pact for the future. It expressed concern over global military spending surge and regional conflicts. It rejected linking climate change with security narratives. It also advocated development-centric multilateral solutions for poverty, hunger, and environmental crisis. It reiterated its strong support for Paris Agreement and the UNFCCC principles. It emphasized inclusive development and also recognized demographic changes as both a challenge and opportunity for development. India took over the BRICS presidency for the next year, and India also emerged as a strong voice in the themes of de-dollarization, climate finance, digital governance, and global institutional reform. BRICS pay and national currency settlement frameworks were also discussed. BRICS multilateral guarantee mechanism was launched by the NDB to mobilize private investment in infrastructure, climate, and sustainable development. Uh, because BRICS is growing as a power bloc, it now represents about 45% of the global population and contributes 35% to the global GDP. That's why US is opposing BRICS. In fact, President Trump warned of a 10% tariff on any country who is aligning with BRICS anti-American policies. But India confirmed that we are not going to target the dollar, but we are exploring alternative trade settlements due to practical constraints.
So the next topic is Defense Accounts Department. This topic is important for our governance section. So Defense Minister has recently underscored the role of Defense Accounts Department in enhancing the operational readiness and financial agility of the armed forces. So this Defense Account Department functions under the administrative control of the Ministry of Defense. It is headed by the Controller General of Defense Accounts. The mandate given to the department is broadly audit, financial advice, payment, and accounting of all charges pertaining to the armed forces. It has a vast geographical spread with over 1110 offices to cater to the needs of all elements of Indian Defence Services. As the principal accounting officer for the Ministry of Defence, the CGDA furnishes necessary information for the appropriation accounts to the Ministry of Defence. It also prepares the annual consolidated accounts of Defence Services receipts and charges. It is one of the oldest departments under the Government of India. Its origin can be traced to the military paymasters under the East India Company. Okay. So the next topic is National Overseas Scholarship Scheme. This topic is important for your governance section. Union Social Justice Ministry is in the process of seeking additional allocation for the National Overseas Scholarship Scheme for marginalized students. So it's a central sector scheme for low-income students from marginalized communities to obtain higher education, preferably master's degree or PhD courses by studying abroad. So each year, 125 fresh candidates are selected by Social Justice and Empowerment Ministry, out of which 115 are SC candidates, 6 are from denotified nomadic and semi-nomadic tribes, 4 are from landless agricultural laborers, candidates, and traditional artisans. 30% of the scholarships each year are earmarked for female candidates. The applicants should be less than 35 years of age. They must be admitted or have received an unconditional offer of admission to pursue a master's or PhD course from an university located abroad, which this university or institute must be accredited by the government of that country. Applicant must have secured at least 60% or equivalent grade in the qualifying examination. The total income of the family of that applicant should be less than or equal to 8 lakh rupees per annum. Remember that bachelor level courses are not covered in this scheme, and not more than 2 children of the same parents or guardians will be eligible for the scholarships. So the next topic is Japonica rice. This topic is important for your environment section. Delhi-based National Institute of Plant Genome Research have used CRISPR CS9 gene editing technology to increase phosphate uptake and transport in Japonica rice varieties. So Japonica rice is a group of rice varieties from northern and eastern China grown extensively in some areas of the world. It's an Asian rice variety and it is characterized by short to medium grain, and it is harder, thicker, and stickier than the traditional white rice. It may have 0 to 20% of amylose content. It is found in the cooler zones of the subtropics and the temperate zones, and it is primary type of rice grown and consumed in Japan. Okay. So the next topic is Northeastern Region SDG Index. This topic is important for your governance section. Recently, the second edition of the Northeastern Region SDG Index report was released by Niti Aayog. So it is developed by Niti Aayog and the Ministry of Development of Northeastern Region along with technical support from UNDP. This is the second edition. The first one was launched in 2021. It measures the performance of districts across 8 northeastern states on the SDGs. It serves as a key tool for monitoring development related progress at the district level in the region to inform decision making. Okay. So the districts are categorized into 4 categories: achiever, front runner, performer, and aspirant. So if the scores are equal to 100, if the achieved targets have been 100%, then achiever category is announced. Then the second one is front runner, and so on. Okay. So all districts in Mizoram, Sikkim, and Tripura have achieved frontrunner status. Mizoram has the highest scoring district in the entire northeastern region. Arunachal Pradesh has the lowest scoring district in the entire region. Sikkim has the narrowest range in terms of score of the highest and lowest district. Tripura has the distinction of having some of the highest scoring districts with minimum intrastate variation. Mizoram and Nagaland have some of the highest scoring districts but also exhibit variation. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.